Jai Shri Ram. Namaste to all of you, and welcome to the Tuesday Satsangh. We will begin with the preliminary purificatory mantras. Sprinkle water on yourselves and all around you. Om apavitraha pavitro va sarvavasthangatopi va yah smaret pundarikaksham sabhahyabhyantarah shuchi. Sip water from the palm of your right hand once with each mantra. Om Keshavaya Namaha. Om Narayanaya Namaha. Om Madhavaya Namaha. Wash your hands. Om Rishikeshaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Om Madhusudanaya Namaha. Put a kusri on your right ring finger. Om Pavitresto Vaishnavyo Saviturvah Prasavah Utpunamya Chidrena Pavitrena Surya Rashmabhihi Tasyate Pavitrapate Pavitraputasya Yatta Kamaha Pune Tachakeyam. Place a chandan dot on your forehead using your thumb. Om Chandanam Bandhate Nityam Pavitram Papanashanam Apadam Harate Nityam Lakshmir Vasatu Sarvada. Light your lamp. Om Bhodipa Tum Brahma Rupa Andhakara Nivaraka Imamayang Kritang Puja Grihastejo Pravardhaya. Om Deepaya Namaha. We will now begin with the invocation mantras. You may follow on your screen. Om. 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 Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Dhyanamoolam Gurur Murtihi, Pujamoolam Guru Padam, Mantramoolam Gurur Vakyam, Mokshamoolam Guru Kripa. Om Swastina Indro Vridashravah, Swastina Pusha Vishwavedah, Swastina Starchor Arishtanemihi, Swastino Brihaspatirdadhatu. Om Payah Prithivyam Paya Oshadhishu, Payo Divyantarikshe Payodhah, Payaswatihi Pradishah Santo Mahyam. Om Vishnoraratmasi Vishnoha Snaptrestho Vishnoha Syurasi Vishnordhruvasi Vaishnavamasi Vishnavetva. Om Agnir Devata Vato Devata Suryo Devata Chandrama Devata Vasavo Devata Rudra Devata Ditya Devata Maruto Devata
देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवताः ॐ द्यौ शान्तिर् अन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिर् आपः शान्तिर् ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर् विश्वदेवाः शान्तिर् ब्रह्मः शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव ॐ आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दबधासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सदमेद्वृधे असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे ॐ देवानां भद्रा सुमतिरिजूयतान् देवानाग्वं रातिरभिनो निवर्तताम् देवानां gwam सख्यम उपसेदिमा वयम् देवान् आयुः प्रतिरन्तु जीवसे ॐ तान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगं मित्रम् अदितिं दक्षमस्त्रिधम् अर्यमणं वरुणगुं सोममश्विना सरस्वती नः सुभगामयस्करत् ॐ तन्नो वातो मयो भुवातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तत्पिता द्यौः तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयो भुवस् तदश्विनाश्रिनुतन्धिष्णयायुवम् ॐ तमीशानं जगतस्तस्तु शस्पतिं धियन् जिन्वमवसे हूमहे वयं पूषानो यथा वेद साम सद्वृधे रक्षिता पायुर्दब्धः स्वस्तये ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्योररिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पृषदश्वा मरुतः पृश्निम् आतरः शुभं यावानो विततेषु जग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वेनो देवा अवसागमन्निह ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम आक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तनुर्भिर्यशेमहि देवहितं यदायुः ॐ शतमिन्नो शरदो अन्तिदेवा यत्रा नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारि ऋषतायुर्गन्तोः ॐ अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् ॐ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये वागोजः सओजो मयि प्राणपानौ ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नाकं गृभणानः सुकृतस्य लोके
तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः। ॐ आयुष्यं वर्चस्य गुं रायस्पोषमोदविदम् इदगुं हिरण्यं वर्चस्व जैत्राया विशतादुमाम्। ॐ द्यौः शान्तिर् अंतरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर् ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति सुशांतिर्भवतु। ओम हे हे रंभ तुमे ये ही अंबिका त्र्यंबकात्मज सिद्धि बुद्धि पते त्र्यक्ष लक्ष लाभ पितु पितः नागास्य नागहारत्वं गणराजा चतुर्भुज भूषित स्वायुधैर्दिव्ये पाशांकुश परश्वधे आवाहयामि पूजार्थं रक्षार्थं च मम क्रतौः इहागत्य गृहानत्वं पूजां क्रतुं च रक्ष मे। ॐ मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अञ्जनीगर्भसम्भूतं कपीन्द्रं सचिवोत्तमं रामप्रियं नमस्तुभ्यं हनुमान् रक्ष सर्वदा। ॐ ध्यायेत् आजानबाहुं धृतशरधनुषं बद्ध पद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामां कारूढ सीतामुखकमल मीललोचनं नीरदाभं नाना अलङ्कारदीप्तं धतत मरुजटामण्डलं रामचन्द्रम्। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैस्तवैर् वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ॐ वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ॐ शान्तं पद्मासनस्थं शशधरमुकुटं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं शूलं वज्रं च खड्गं परशुम् अभयदं दक्षिणाङ्गे वहन्तं नागपाशं च घण्टाडमरुकसहितं अंकुशं वामभागे नाना अलंकार दीप्तं स्फटिकमणिनिभं पार्वतीशं नमामि। ॐ या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावर्धनमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ लक्ष्मी क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंगधामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मन्द कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेन्द्र गंगाधरां तां त्रैलोक्य कुटुंबनीं सरसिजां वन्दे मुकुंद प्रियां। ओम सीताराम पवन सुत हनुमान राधे कृष्ण की जय। अरुणाधर जल बिंब फल नैन
पीतांबर शुभ सार, जय मनमोहन मदन चरी, कृष्ण चंद्र महाराज, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वासुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के रखवारे। जय नथ नागर नाग नंदैया, कृष्ण कन्हैया देव चढ़ैया, पुनिनक पर प्रभु गिरवर धारो, आओ दीन कष्ट निवारो, बंशी मधुर धर धर तेरो, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि गुण माखन चाको, आज लाज भक्तन के राखो। गोल कपूल चिबुक अनुरानी, मृदु मुस्कान मोहिनी लारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजयंती माला, कुंडल श्रवण पीत पत्राचे, कटकिन किनी काचिनी काचे, नील जलज सुंदर तन सोहे, चविलक सुर नरी मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलख घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पैपन उतन नहीं तार्यो, अका बका कान्हा सुर मार्यो, मधुबन जलत अग्नि जब ग्वाला, भय शीतल लखतिन नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चरियोर साई, मुसरधार बारी बरसाई। लखट लखट ब्रिज चाह बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखियो शोधमन ब्रह्माधिकारी, मुखमन चौदह भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उद्यम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाट कलियहि तब तुम लीन्यो, चरण छीन दई निर्बल कीन्यो। कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, कीर्ति महा असुर संहार्यो, कंस केश पकड़ धर मार्यो, मात पिता की बंदी चुराई, उग्र सेन का राज दिलाई, मन से मृतक चहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो। बहुमसुर मुर दैत्य संहारी, लाई शतदस सहस कुमारी, दैवी मही तन चीरी संहारा, जरा सिंधु राक्षस का हमारा,
असुर बकासुर आधिक मार्यो, भक्तन के सब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख तारियो, तंदुर तीन मूर्ति मुख दारियो। प्रेम का साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन की मेवा त्यागे। लखि प्रेम की महिमा भारी, ऐसी शान दीन हितकारी। भारत की भारत रखा के, लिए चक्र कर नहीं बलता के। निज गीता के ज्ञान सुनाई, भक्तन हृदय सुधा बरसाई। मीरा थी ऐसी मतवाली, विष पी गए बजा कर ताली। राणा भेजा साप पितारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विरही दिखायो, उड़ते शमशेर शकल मिटायो। तब शत निंद करी तितकाला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरते ही वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भाई हरि ममताला। आस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भाव बचावत नैया। सुंदर दास आस उधारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवार्यो, क्षमाहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन कीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का, पाठ करे उधारी। अष्ट सिद्धि नव निधि फल, लहे पदारथ चारि। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठी दुनिया झूठी बंधन, झूठी है ये माया। झूठी दुनिया झूठी बंधन, झूठी है ये माया। झूठा सास का आना जाना, झूठी है ये काया। ओ यहाँ सत्य
सच्चा तेरा नाम रे बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। दर्शन तेरे जिस दिन पाऊं, हर चिंता मिट जाए। जीवन मेरा इन चरणों में आस की ज्योत जलाई। ओ मेरा बाह पकड़ लो शाम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे, बनवारी रे, जीने का सहारा तेरा नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे। Jai Shri Krishna, Bhagavad Gita, Chapter 3, verse 24. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Utsideyur ime loka, na kuryam karma chedaham, sankarasya च कर्तास्याम् उपहन्याम् इमाः प्रजः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे. Here Shri Krishna says that Chetahamna Kuriyam Karma. If I don't perform the prescribed duties, what will happen? Ime Loka. This entire world will be Utsideyur, put into ruin. Shri Krishna is saying this because Sankarasya Chakartasyam, that this will give rise to unwanted population. And then he says, Upahanyam imahi prajaha, and this will actually destroy the peace of all the living beings. तो यह ध्यान केंद्रित करने की महत्वपूर्ण श्लोक है. This is a very important verse to focus on. Actually, every single verse of Bhagavad Gita has a hidden meaning, and only a devotee of Sri Krishna can understand and tell us what the hidden gems are in these verses. Now let's go a little bit back in the Bhagavad Gita. In chapter 1, verse 40, Arjun acted very smartly. Well, he thought he was smart when he told Sri Krishna, I will not fight.
He said, if I fight, all these personalities who are taking care of their families will be killed, and all the women that are there will become widows. And what will happen after that? They will be polluted because the rogues and thieves of that society will take undue advantage of that situation. He says, when they get polluted, unwanted population will manifest, and that will lead to chaos. And then no one will follow the rituals given in the Vedic scriptures. Now here we see that Sri Krishna is now pointing to this particular reason of Arjun. You see, when Sri Krishna appeared on earth as a human being, he conducted himself with finesse as a member of the royal warrior class. If he had acted otherwise, other human beings would begin to imitate. Had Sri Krishna failed to perform Vedic duties, human beings following his example would be led away from the discipline of karma into a state of chaos. This would be a very serious offense, and Bhagwan Shri Krishna would be considered at fault. इसलिए उसने अर्जुन को समझाया कि यदि वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो इससे समाज में कलंक पैदा होगा. That is why he explains to Arjun that if he did not fulfill his duties, it would cause pandemonium in society. Similarly, Arjun was world famous for being undefeated in battle and was the brother of the virtuous king Yudhishthir. If Arjun refused to fulfill his duty to protect dharma, then many other worthy and noble warriors would follow his example and also abandon their prescribed duty of protecting righteousness. यह दुनिया के लिए विनाश लाएगा और निर्दोष लोगों को बर्बाद कर देगा. This would bring destruction to the world's balance and the ruin of innocent, virtuous people. That is why, for the benefit of the entire human race and the welfare of the world, Sri Krishna coaxed Arjun not to neglect performing his prescribed Vedic activities. Now, Bhagwan Shri Krishna is the father of all living entities. And if the living entities are misguided, indirectly the responsibility goes to Bhagwan. We should note carefully that although we have to follow in the footsteps of Sri Krishna, we cannot imitate him. अनुसरण और अनुकरण समान स्तर पर नहीं है. Following and imitating are not on the same level. We cannot hold a book on our little finger, let alone trying to lift the Govardhan mountain. बहुत से लोग भगवान शिव की नकल करने के भी कोशिश करते हैं. Lots of people try to imitate Lord Shiva as well. Saying they are devotees of Lord Shiva, they can also do as he does. By the way, Shivji does not take any intoxicants because he is a topmost Vishnu Bhakt. So why will he break the regulatory principle? We can then ask this question. Why don't people then take poison like Lord Shiva did and hold it in their throats? Then they too will be referred to as Nilkant as well. When we drink water, we can't hold it in our throats. It will go directly into our body. So, no one will even take a chance of drinking that poison. It is also said that Sri Krishna stole the clothes of the gopis, but nobody talks about Sri Krishna supplying meters upon meters of lengths of sari when Draupadi's Vastraharan was taking place. So, Sri Krishna refers to these people as ignorant and foolish. But by us following the instructions of Sri Krishna, we will be able to uplift ourselves in this material world. हम जानते हैं कि अगर भगवान श्री कृष्णा ने
अचानक काम करना बंद कर दिया तो दुनिया को बहुत बड़ा नुकसान होगा. We know that the world will take a huge hit if Lord Krishna abruptly stopped working. For instance, we all know what happens to a society when there is a breakdown of law and order. There will be confusion and destruction all around. Also, civil and criminal laws are just man-made laws. सोचिए अगर प्रकृति काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? Consider what would happen if nature stops working. If the law of gravity, a universal law, stopped working, people, buildings, and every freestanding object on this earth would start flying out into space to its eventual destruction. और अंत में क्या होगा अगर हमारी सांस और हृदय काम करना बंद कर दिया? And finally, what if our breathing or functioning of the heart stopped working? Therefore, the message to Arjun is clear here. Any task, no matter how insignificant or unpleasant, should be performed selflessly and with skillfulness, especially if it is in the service of the betterment of the world. Jai Shri Krishna. Hari Om, Ramayan part. Today we are doing Balkan Doha 150. Jehi Sumirat Siddhi Hoy Sitaram Gananayak Karibar Badana Karo Anugraha Soy Sitaram Buddhirasi Subhaguna Sadana Mukha Hoy Bachar Sitaram Pangu Chadhai Girivar Gahana Jasu Kripa Sudayal Sitaram Gravo Sakal Kalimal Dahana Nila Saroru Sham Sitaram Karuna Aruna Barijanayana Karo Sumama Uradham Sitaram Sadachir Sagar Sayana Kunda Indu Samadeha Sitaram Umaraman Karuna Ayana Jahidin Parneha Sitaram Karo Kripa Mardana Mayana Bandau Guru Padakan Sitaram Kripa Sindhunar Rupa Hari Mahamohatam Kunja Sitaram Jasu Vachan Ravikara Nikara Siyavar Ramchandra Ki Jai Pavan Sutta Hanuman Ki Jai उमापति महादेव की जय। कथा आरंभ होत है सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु आइए सिया सखा सहित भगवान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। So we're beginning with Balkand, Doha 150. सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, सोई निज चरण सनेहु, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि देहु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनि मृदु गूढ़ रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी न अनुग्रह तो मोरे। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सुत सुत पिशैक तव पद रति हो, मोहि बर मूढ़ कहे किन को। मणि बिनु फनि जिम जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। असबरु मांगी चरण गहि रहेऊ, एवमस्तु करुणा निधि कहेऊ। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तह करि भोग विशाल, तात गए कछु काल पुनि, होई हहु अवध भुआल। तब मैं होब तुम्हार सुत, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। So we are reading the part where Sri Ramchandra ji has just granted a boon to Manu. And he then noticed that Shatrupa also had palms together, and he offered her a boon. So right at the beginning of this, being Women's Day, we must understand that Ramchandraji didn't say, okay, you are husband and wife, I've given the boon to Manu, so you are included in that. He treated Shatrupa as he would have treated Manu. Both were treated in the same way. As he offered a boon to Manu, he also offered a boon to Shatrupa. So Hinduism and Sanatan Dharma considers male and female, all creatures actually, are considered to be on an equal footing. It is only our outside material shape that is different. And Bhagwan is leading by example that he offered Shatrupa a boon. So what did she ask? She said, Soi sukh, soi gati, soi bhagati, soi nij charana se nehu. That type of devotion that your closest devotees have for you. She says, may I have that same devotion. वैसा ही स्नेह और प्यार आपके चरणों में मुझे रहना. I also want to have that kind of love at your feet, that devotion to your feet. I want that kind of mindset, that kind of attitude, that kind of wisdom and knowledge. So, soi vivek, soi rahani Prabhu. I want to be exactly like your closest devotee. So, Suni mridu good ruchir bar rachna, kripa sindhu bole mridu vachna. Kripa sindhu, the ocean of mercy, spoke mridu vachna, sweet words. Why? He says, hearing Suni mridu good, hearing the tender and pleasing words of Rani Shatrupa, Bhagwan, the ocean of mercy, responded in a sweet manner. What did he say? Jo kachu ruchi tumre man mahi,
Mai so deen sab sanse nahi. I have already given all this to you. Consider it done. So Bhagwan is saying, whatever you are thinking about, what is in your mind, what you want, and you have asked, consider it already done. You will have that. Ma tu vivek alokik tore, kabahu na mitahi anugraha more. So then he says, oh Mata, he addresses Shatrupa as mother. मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा. That by my grace, by my mercy, मेरे कृपा से your अलौकिक ज्ञान, this ज्ञान, this knowledge that is out of this world, transcendental, this spiritual knowledge of yours will never diminish. It will never be destroyed. By whose grace? By Bhagwan's grace. Muni, Bandi charan manu kahe ubahori, avar ek binati prabhu mori. So now Manu ji, he put his palms together and made an appeal for another boon. He fell at Sri Ram's feet. Right? It says here, ki Bhagwan ke charanon ki vandana karke. So he fell at his feet and he says, I have one more wish. I have one more request, O Lord. And what did he appeal for? He says that he must have love for Bhagwan jaise pita apne bete ke. Just like a father has love for a son. That means you will be born as my son. But my relationship with you must be on that level, the level of a father and son. The kind of relationship that exists between father and son must exist between me and you. आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है. Putra is son and pita is father. And he says, चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, मोही बड़ मूढ़ कहे कि न कोई. Even though people may refer to me or consider me to be the greatest fool, I still want to have that kind of love. Right? जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली, just like a fish out of water, वैसे ही मम जीवन तिमि तुम ही अधीना, that my life must be like that of a fish out of water when I am separated from you. आपके बिना न रह सके, I must not be able to live without you. Now, if you look at this, and you know, all of you know the Ram Katha, then you know that when Raja Dashrath was separated from Ramchandra ji, then this boon was fulfilled. He gave up his life. He was not able to live without Sri Ram. ऐसा वर मांग कर राजा भगवान के चरण पकड़े रहे, and he just asked for this boon and he kept on clasping Sri Ramchandra ji's feet. So तब दया के निधान भगवान ने कहा, this ocean of mercy, the abode of mercy, Sri Ram, he responded, he replied, ऐसा ही हो, may this may come to be true, may this come to be true. That means I grant your wish. अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति रजधानी. Now you must follow my instructions. मेरा अनुशासन, तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी या अमरावती में जाकर वास करो. Now you must go to the heavenly abode where Indraji is the ruler. So if we want to get our boons,
our wishes to be fulfilled, obviously, there are a few conditions. The first one is that our boons must be like the kind of boons that our wishes must be like the kind of wishes that people like Manu and Shatrupa asked Sri Ram. They must not be mundane wishes. They must be wishes of a higher spiritual nature. But just making those wishes is not sufficient. We must be completely devoted to Bhagwan, like Manu and Shatrupa were. Like Manu fell at his feet and clasped his feet. But also, all these wishes that we have, they can only become a reality when we engage in tapasya, like Manu and Shatrupa did. That means there has to be effort on our part. Whether these wishes are on the mundane level or on the higher spiritual level, it requires effort. We cannot say, I want to have a new car and don't make an effort to purchase that car, to get the means to purchase that car. On the mundane level, that is, effort is required. But on a higher level, you cannot say, I want to come and get Bhagwan's darshan, but you never go to the mandir where you can get the darshan. You never engage in puja part and japa that would take your mind to that state where darshan is possible. So this effort is what is required. So when that kind of effort was made, then Bhagwan said, now follow my instruction. So what is the other condition? To fulfill our wishes, we must follow the instructions of Bhagwan. जो आज्ञा भगवान देता है, उसी के अनुसार हम लोग चलना चाहिए. That is how we must operate, according to the wishes of the Lord, according to the instructions of the Lord. And then Bhagwan says, when you go there to Swargalok, तो वहाँ बहुत से भोग भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा, तब मैं होब तुम्हारा सुत. So Bhagwan says to Manu and Shatrupa, go to Swargalok and enjoy the comforts there for some time. And when that time is elapsed, then you will be born in Ayodhya and you will become the king of Ayodhya. And then I will be born as your son. So, two things I want to comment on here. We read in Garud Puran that those who engage in good activities, but they do not achieve moksha, because of the good activities, they go to the heavenly regions and enjoy for a while, but then they return to this world. And this is exactly what is happening to Manu and Shatrupa. They are going to be born again after they've exhausted their good karmas. And the other important thing for us to understand is that the real benefit of Manu and Shatrupa's tapasya, the effort that they made, this spiritual practice that they engaged in for such a long period of time, the benefit was not just the granting of the boon by Sri Ram. That boon only materialized in the next life. That means there was no hurry. Manu and Shatrupa knew that they have to take birth again, but before they take birth, they're going to spend some time in Swargalok. So the real benefit will only come to them when they are born again in the next life. If they were prepared to wait that long, even after they did so much of tapasya, which we read about a few weeks ago, why are we in a hurry without even any tapasya? We are not doing much tapasya. We are not making much effort in our life, and we are in a hurry.
Yet Manu and Shatrupa made such great effort, and they were happy to wait out the time in Swargalok and then be born again in Ayodhya and then get the fulfillment of their tapasya. कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान, आसन को प्रभु जाइए, सिया सखा सहित भगवान, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय. जय श्री राम. मैं हिमाचल की बेटी, मेरा भोला बसे है काशी, सारी उम्र तेरी सेवा करूंगी, बनकर तेरी दासी. शंभू शिव 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 शंभू, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए. डमरू को सुनकर कान्हा जी आए, कान्हा जी आए संग राधा भी आए. वह सखियों का, वह सखियों का, वह सखियों का मन भी मगन हो गया, जब डमरू बजाए भोलेनाथ रे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे. गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले. डमरू को सुनकर जी गणपत चले, गणपत चले संग कार्तिक चले. वह अम्बे का, वह अम्बे का, वह अम्बे का मन भी मगन हो गया, जब डमरू बजाए भोलेनाथ रे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया. सीता का मन भी मगन हो गया, जब डमरू बजाए भोलेनाथ रे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया.
ब्रह्मा चले वहाँ विष्णु चले, मैया लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का, मैया लक्ष्मी का मन भी मगन हो गया जब डमरू बजाए भोलेनाथ रे, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, ऐसा डमरू बजाए भोलेनाथ रे, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया, सारा कैलाश पर्वत मगन हो गया। गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा। राधे जी का नाम से ही कृष्ण दौड़ आए हैं, जिसने बुलाया राधे कृष्ण को वो पाया है, राधे जी का नाम से ही कृष्ण दौड़ आए हैं, जिसने बुलाया राधे कृष्ण को वो पाया है, गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरी काम आएगा, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे। जपे जाओ राधे राधे भज मन गोविंदा, ब्रज भाव प्यारे राधे नागर नंदा, जपे जाओ राधे राधे भज मन गोविंदा, ब्रज भाव प्यारे प्यारे नागर नंदा, गोविंद भजले प्यारे गोपाल भजले प्यारे, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, भजले राधे नाम तेरे काम आएगा, गोविंदा गोपाला श्री श्यामा राधे, 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 राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे।
मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावे मुरली मधुर भाला, श्रवण में कुंडल जल काला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कंठ काली, राधिका चमक रही आली, लटन में ताही बनमाली, ब्रह्म सी अलग कस्तूरी तिलक, चंद सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सौ सुमन राशि बरसे, बजे मूर्छंग मधुर मृदंग, वालिनी संग अतुल रस गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रगट भई गंगा, कलश कलहरणी श्री गंगा, स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच, हरे अध कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल खत रेणु, बज रही वृंदावन वेणु, जहाँ दिशि गोपी ग्वाल देनु, बजत मृदंग चांदनी संग, कतक भव फंद तेन सन दीन बिखारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। ॐ मङ्गलं भगवान् विष्णु, मङ्गलं गरुडध्वज, मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष, मङ्गलाय तनोहरि, सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते, नारायणी नमोऽस्तुते। Sprinkle water. Om yani kani cha papani janmantara kritani cha tani tani vinashyanti pradakshina pade pade. Om sarvesham swastir bhavatu, sarvesham shantir bhavatu, sarvesham purnam bhavatu,
सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ अपराधसहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम, तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष त्वं परमेश्वर। बोलो श्री गणेश भगवान की जय, जगत जननी पार्वती माता की जय, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मण जी की जय, श्री महावीर स्वामी बजरंग बली की जय, श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, शिव शंकर भगवान पार्वती माता की जय, गंगा माता की जय, यमुना माता की जय, गौरी माता, काली माता, दुर्गा माता, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय सिया राम।